first of all, I would really like to thank you and Mariam. It's a very good initiative, and as it's popularly said also that this is a collective effort. Again, there's a big state of confusionism that is going on. The biggest threat which this pandemic is carrying with itself is that it is unknown. You will not get any clear-cut answer on this from anyone today. And I am even perceiving even the next 1 month or 2 months or even 3-4 months. ठीक है, because people are actually not sure what's going on. ये हुआ क्या एकदम से? I mean, I know I've talked to many people and they're saying कि हम अपनी पुरानी photos देख रहे हैं, even week back, 2 weeks back की photos देख रहे हैं, and it's as if कि वो कोई दुनिया ही और थी. That was a different time zone in which we were living. So देखिए, this is a whole panic situation. अब इसमें what should we do and how will the economy, I won't say survive, but the correct word should be how should the economy react? ठीक है, because frankly speaking, no one has any survival tips right now. And this is very important for individuals, for families, for businesses, for societies, for country also. ठीक है, and then globally the whole world also. It's important that how we are reacting to this pandemic. मैं आपको इस तरह बता दूं, even countries are reacting differently. You know, the initial reaction of the United Kingdom was that let it spread. The human body will automatically develop immunity on this virus. अब ये है कि वो भी लॉकडाउन की तरफ आ गए, but this was their approach. Germany has a totally different approach. वो कह रहे हैं कि सब छोड़ें, हम वैक्सीन की तरफ जाते हैं. We will develop the best vaccine and we will develop it. And yes, they have the potential. Pakistan approached it very different. Even within Pakistan, आप देख लें. The federal government approached it differently. The provincial government approached it differently. So why is this happening? Because we are confused. हमें पता ही नहीं है क्या हुआ है हमारे साथ. It's important how we react, how startups react, how companies react. One reaction is the workers lay off कर दो. We can't carry the burden. Workers lay off कर दो. एक रिएक्शन हमने ये भी देखा है कि our workers cannot carry the burden. Salary double कर दो. ठीक है. अच्छा, मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं, साद एंड मरियम, both companies will have their justification and both companies will be correct in their justification. Only attribute that will actually define that who comes out successful after this pandemic is resilience. What is resilience? Resilience, if I were to explain it in simple terms, well, yeah, when you hit the extreme bottom, how do you come out of this? Pakistan ने एक ऐसा टाइम देखा था where we as a nation came out in a very resilient manner. That was a very big shock to Pakistan's economy and even society also. That was back in 1970s when Bangladesh was created. That was the time when Pakistan was extremely vulnerable. Extremely vulnerable. आपको पता है, एक मजे की बात बताऊं, resilience factor में Pakistan nation comes in the top 5. यही approach हमें लेके चलना है. देखिए, इसको हम मार्केटिंग की लैंग्वेज में इसको हम बहुत कहते हैं द मार्केटिंग ऑफ फेयर. ठीक है, अभी जो दुनिया में चल रहा है ना, व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री, वी आर एक्सपीरियंसिंग अ ग्लोबल फेयर. पेंडेमिक्स आए हैं पहले, वायरसेस आए हैं पहले, स्पेनिश फ्लू आया था, ठीक है, बहुत उसने प्रॉब्लम किया था. इबोला आया था रिसेंटली, उसने बहुत प्रॉब्लम किया, बट दे वर कन्फाइंड टू स्पेसिफिक रीजन्स. करंटली 3 billion people are into lockdown. दुनिया की population भी 7 to 8 billion है. 90% of the global student population are out of school. No one anticipated ये हो क्या रहा है. It will depend on how we react. अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इस वायरस के biological effects चल currently. तबीयत खराब है, deaths हो रही हैं, ये अभी biological effects है. अभी economic effect तो आया ही नहीं. Exactly. ठीक है. Once this biological effect finishes, then the economic effect will come. ठीक है, अभी तो हम लोग अपनी जान बचा रहे हैं. अभी इकोनॉमी तो अभी इफेक्ट आया ही नहीं है. लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इकोनॉमिक इफेक्ट आना शुरू हो. Major corporations are applying for bailout. There are many big corporations who run their business on daily basis. उनके सेविंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिटेल स्टोर की आपको सेविंग्स नहीं दिखेंगी. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज टर्नओवर इन देम. वो डेली अगर 1 बिलियन का बिजनेस कर रहे हैं तो उनको नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 80% उस अमाउंट को दोबारा इन्वेस्ट करके उस टर्नओवर को खरीदना. People had not saved, businesses had not saved. As I said, कि no one anticipated this. अगर हमें पता होता ना 1 साल बाद कुछ आने वाला है तो चलो भाई पहले से सेविंग्स कर लें, बिजनेस को वैसे मोल्ड कर लें. A very famous company is applying for bailout. Virgin Atlantic is applying for bailout. Economic effect आया नहीं है. Economic effect में bailout सप्लाई होंगे. उससे पहले ही बेल आउट सप्लाई होना शुरू हो गए.
the $2 trillion package. देखिए इतना बड़ा पैकेज उन्होंने अनाउंस करा है. The global financial crisis of 2008-2009 वो कितना बड़ा क्राइसिस था. Lehman Brothers, 150-year-old company gone. AIG almost gone. General Electric almost gone. Citibank almost gone. और छोटी कंपनीज तो गई. These are big boys. They were almost gone. इन सबको बचाने के लिए a package of 700 billion was announced. And this is what 1.5 times that package. So देखिए, the first thing that I want to make clear is that how we react to this pandemic. This will define our trajectory ahead. Individuals, societies, companies, and countries. If you go back 2-3 months back, when the pandemic break was at its peak in Wuhan, China, तो वहाँ पे हमारे मीडिया में क्या बात चल रही थी? चाइना से हमारे स्टूडेंट्स को वापस बुलाएं, and there's agitation going on, protest going on, and everything. ठीक है, even मैं भी इसमें आ गया था कि यार ये तो गलत हो रहा है, इसको चाइना से बुलाएं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं. Even today we see that there is not even a single case of coronavirus in Pakistan that came from China. Yeah. एक केस भी नहीं आया. Why? Because 2-3 months back, whoever took this decision, I don't know, whoever took this decision, the government, their reaction was correct. And today they're appreciating that decision. ठीक है, आज लॉकडाउन को हम बाहर चले जाए, नहीं कुछ भी नहीं है, मास्क लगा लें, ग्लव्स पहन लें, नहीं बाहर चले जाएं, बिजनेस कर लें, भाई हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, एक्सेट्रा. 2 महीने बाद खुदा ना खास्ता इफ यू गेट इनटू दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक, उस टाइम सोच रहे होंगे यार काश हम जो है ना हम रिएक्ट कर जाते. So it will depend how we react. Coming to the economy, ठीक है. First of all, let me first clear one thing. देखिए, economy survival तो खैर अब I don't know, वो आने वाले वक्त में हमें खुद ही अंदाजा होगा that how will the economy survive. But the economy operations will change, and it will change massively. ये जो चीज आ गई है of social distancing, this is going to play a major role in the global economy. Japan is the least affected country, जबकि Japan has a very big population who are old age. ठीक है, and apparently the doctors say that this affects the old age people more. ऐसा क्या हुआ जापान में? ठीक है, जापान के अंदर their culture and in their tradition, it's already embedded that they practice social distance. जापान में वो हाथ नहीं मिलाते, they bow down. जापान में they already wear masks when they're traveling in and out. ठीक है, and those places which are highly into customer dealing, they already wear masks. तो कह रहे हैं हम लोग तो पहले से सब कुछ कर रहे हैं, और वहां पे नहीं हुआ. अब ये बात जहन में रख लिएगा, आई एम रिकॉर्डिंग इट आल्सो. सोशल डिस्टेंसिंग will become the norm of the global economy. Countries and businesses will be bound to cater to this social distancing. And the irony is that a human is always labeled as a social animal. अब कहना है आप उसमें से social का part हटा दें, बचा क्या फिर? Animal. बता कि animal. Now you're asking us to behave like animals. आप खुद देखें ना कि if we go out, कल जी लॉकडाउन अनाउंस हो गया, लॉकडाउन खत्म, जाए बिजनेसेस के ऊपर. मैं देखता हूँ हम लोग कितने लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के करीब जाते हैं. I agree. We won't. ठीक है, but the problem is that we are not accustomed to live like this. Nature हमारा क्या है? We are social people. We need to interact with people. We need to meet people. We need to touch people. ठीक है, we need to hug people. और suddenly, in a span of 2 weeks or 2 months, suddenly हमें कहा गया कि अपने नेचर को तब्दील करो. अब what will this create? This will create a state of confusionism. ये confusion जब आएगी, it will all depend how we react. Economy भी सही हो जाएगी. देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है. Economy भी सही हो जाएगी, but economy and the world will not operate the same way. It cannot operate the same way. Us, the media, the governments, the societies, the corporations, they all are focused on the biological aspect of this virus right now. Right. ठीक है, अभी हम लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे नहीं आए हैं, अभी हम लोग सोसाइटल एस्पेक्ट पे नहीं आए हैं. दैट हाउ विल द सोसाइटी ऑपरेट. अभी हम किसी को देख लें, आप जरा बाहर जाएं, आप चेज अप जाएं, आप नाहीद जाएं, एंड इफ समवन स्नीजेस, व्हाट फियर एंड पैनिक विल एवरीथिंग क्रिएट. ये तो अभी हम लोग इस फेज में आए नहीं है. दिस पेंडेमिक विल इवॉल्व इन 3 phases. द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट व्हिच इज करंटली हैपनिंग, अपने आप को बचाओ, लॉकडाउन में जाओ, मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो. ठीक है, द सेकंड स्टेज ऑफ दिस वायरस विल बी द सोसाइटल एस्पेक्ट. हाउ विल द सोसाइटी रिएक्ट. ठीक है, और मैं आपको बताऊं, अभी हमारे अगर घर में जो हमारे फेवरेट मामू होंगे, इफ ही वॉक्स अप विद हिज फैमिली, मैं देखता हूं कौन उनको घर में घुसाता है अभी राइट नाउ. ठीक है,
इट्स अ नेचुरल थिंग. हम लोग जब बाहर निकलेंगे लॉकडाउन से, हम अपने रिलेटिव से कैसे मिलेंगे? विल वी शेक हैंड? विल वी हग देम? तीसरी बार ये कि हाउ द इकोनॉमी रिएक्ट. इसके अंदर एक और जो अभी एक रैशनल जो डेवलप हो रहा है वो ये हो रहा है कि सिंस एवरीबडी इज लाइक फोकसिंग ऑन वर्क फ्रॉम होम, दैट इज क्रिएटिंग सो मच मेंटल स्ट्रेस, और उस हिसाब से लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशंस भी इस तरीके से बढ़ रही है. सो मेनी स्पेकुलेशंस आर कमिंग के देयर वुड बी अ फ्रस्ट्रेशन ब्रेक पॉइंट इन विच इवन इन आवर रीजन के अभी जो हम लोगों को तो प्रिज्यूमेबली वी आर लाइक फोर्स्ड टू लॉक डाउन, राइट? तो आगे जाके डू यू सी आवरसेल्व्स गेटिंग प्रोन, वही मास्क पहना, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर रखा एंड ऑफ वी गो जस्ट टू लाइक अडैप्ट टुवर्ड्स ओके कोरोना वायरस इज देयर आउटसाइड बट वी वोंट कम टू अ हॉल्ट? There are two things in this question of yours. The first thing is this WFH thing, the work from home thing. देखिए, we are not accustomed to work from home, number one. ठीक है? आपको पता है कल, I think कल या परसों, yesterday or day before yesterday, Pakistan Human Right Commission, the National Human Right Commission, it has announced a telephone line or an email line, something like this, ठीक है, in which they have said कि जो women और children पे घर पे abuse किया जा रहा है वो यहाँ report करें. Cases of abuse has increased, physical abuse. अभी कितना हुआ हमें लॉकडाउन में? आई थिंक दिस इज द 9th डे और द 10th डे, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. एंड फिजिकल अब्यूज, व्हाई? बिकॉज़ जो आपने बात की ना साथ, द फ्रस्ट्रेशन लेवल, वी आर नॉट अकस्टम्ड. हम लोग घर में तो हार्डली खाना खाने आते थे या सोने आते थे. वी आर नॉट अकस्टम्ड टू लिव लाइक दिस. ठीक है. तो देयर इज मैसिव, देयर इज अ राइज इन केसेस ऑफ अब्यूज आल्सो, के द मेल एंड द फीमेल्स आल्सो, इवन द चिल्ड्रन आल्सो. ठीक है. अब हर एक के पास ऐसा यहाँ लाइफस्टाइल नहीं कि गार्डन्स हो, वहां पे जी क्रिकेट खेल रहे हैं और बाहर जा रहे हैं. वी आर लिविंग इन अपार्टमेंट्स, वी आर लिविंग इन क्लोज्ड बंगलोज. ठीक है. यहाँ पे तो वो सिनेरियो है ही नहीं. देखिए, व्हाट इज द रीजन चाइना हैज ऑलमोस्ट 90% ओवरकम द कोरोना वायरस? बिकॉज चाइना एज अ नेशन और अ रीजन व्हिच हैव दिस एटीट्यूड ऑफ प्रिकॉशन. द चाइनीज पीपल, they have this attitude of precaution. आप किसी को नॉर्मल डेज में भी कह देना I'm not feeling well, please stay back, they will consider it as कि हमारे ऊपर इसने एहसान कर दिया. तो पाकिस्तान का मसला ये है that our attitude is not a precautionary attitude. You go into areas, रश ही रश है, precaution है ही नहीं. We take precaution. हम जी लॉकडाउन खत्म होता है, we wear mask, we wear gloves, we go out. हम तो अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन सामने वाला तो precaution नहीं ले रहा. So this attitude has to change. There's a research that if you want to change the attitude, the psychological attitude of people, if you want to change the psychological attitude of the people, it will take you 40 years. 40 years. It will take you 40 years. 4 was if easier. you want to change. Now this has completely reshaped it everything. अगर education के लिहाज से बात की जाए तो many of the startups, many of the solutions, even schools are maneuvering themselves to come digitally. But वो adaptability का factor और willingness का factor is still missing. They are not ready to adapt it like completely. This is the need of time and they have to take it. Because it's a problem in our attitude. And why I'm saying 40 years? Whatever psychological attitude there is in us, and today, आज अगर हम decide करते हैं इसको हम change करें, ठीक है, तो ये generation change नहीं कर सकती. This generation will start to adapt to this change, but it will not change completely. It will take you almost one whole generation to change that attitude. और एक जनरेशन का जो टाइम है वो है 30 to 40 years. कि आज जो सेकंड जनरेशन काउंट होगी वहां से 40 years 40 के अंदर जनरेशन आएगी, that will be counted as the next generation. लेकिन why is the online business not booming in Pakistan just like it is booming in other countries? क्योंकि हमारी ऑनलाइन सेल्स क्या है? हार्डली 2%, 3%. ठीक है. इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पाए हैं ऑनलाइन सेल्स, because there's a problem in our attitude. ठीक है. We do not accept online buying. ठीक है. जब तक हम प्रोडक्ट को, गुड को देख ना लें. ठीक है. So to change this attitude and to bring people to online buying, it will take them 40 years to change this attitude. ठीक है. Pakistan is at a very crucial stage, and I am surprised also that today the UNDP issued a report that the developing countries will be hit the most by this. The economic aspect will be hit the most. And specifically, they took two names of those developing countries, Argentina and Pakistan. ये 5 years or 10 years की बात, in 1 year, they need to inject $3 trillion. They can now cater to this virus in 3 aspects: the biological aspect,
उसमें हमारी क्या हेल्थ केयर की क्या सिचुएशन है, लॉकडाउन क्यों जबरदस्ती करवा रहे हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता if this rapidly spreads we don't have the resources to contain that virus. Exactly. The biological aspect, the societal aspect and the economic aspect, I don't know how will we deal with that, how will we deal with it. So Pakistan ko waqai we need to put a lot of faith in Allah Taala, and we need to pray a lot कि इस चीज से हम निकल जाएं, और ना कि सिर्फ निकल जाएं, अच्छे रिएक्शन के साथ we survive it also. देखिए the world will inshallah come out of this, we will come out of this, but it will define, and I was talking to some analyst also, we might even see after this pandemic is over, we might see a change in the superpower system also. What this virus has done in the past 2 weeks, and more specifically in the past 2 months, what this virus has done, it has majorly shifted many things. Those companies which were considered, which I call a lot, who were considered as too big to fail, ठीक है, वो आज जो है ना, they're kneeling on their knees and they're saying that save us. देखिए अभी तो corporations ने bail out apply नहीं करा है, मैं फिर कह रहा हूँ. Once you start to see this shifting to the economic aspect, and once we start to see that the level of bailouts that corporations are applying, ठीक है, उस time हमें अंदाजा होगा कि what exactly is going on in the economy. In this COVID-19, what we're forecasting is that there will be almost 200 to 300 big companies that will be applying for bailout. Again, the travel has stopped. Completely stopped. All airlines have stopped. ठीक है, airlines gone, airports gone. ठीक है, I don't know अभी Emirates और बड़ी companies जो है कब तक survive करेंगी. ठीक है, and if this lockdown continues for 2 months, अल्लाह ना करे, we will see a whole different world then. When bailouts are applied, again, bailout are not something that's very acceptable for organizations, क्योंकि bailout का सबसे बड़ा problem क्या होता है, the status of that company is destroyed. And when that's destroyed, the stock market, the stock price goes down crashing. The investors won't buy their shares. Investor खरीदेगा ही नहीं उनके shares. Bailout के बाद भी के तो इतनी vulnerable company हो तो वैसी company खत्म हो जानी है. ठीक है, आप देखिए ना, those companies who applied for bailout after GFC, yes, they did survive. But आज उनके नाम भी हमें इतने नहीं. Citibank आप देखें, Citibank was such a popular bank. और आज आप globally देखें, आपको top 10 banks में Citibank hardly दिखेगा. Right now, we're in a state that no one can give you a clear-cut answer. देखें, अभी कोई आपको biological aspect में COVID-19 का कोई clear-cut answer नहीं दे पाता, कोई दे ही नहीं सकता. Once we hit the societal aspect, यही question आएगा. How can the society cater to this? आप देखिएगा, बहुत से psychologists and बहुत से psychiatrists, बहुत से neurologists, ये सब आगे आएंगे, and they will be asked this question that how will we react? मैं अपने घर वालों से कैसे मिलूं, अपने दोस्तों से कैसे मिलूं, दूर से मिलूं, करीब जाके मिलूं, how do I interact with my colleagues in the office? How will a teacher interact with his students in the classroom? We don't have answers. The psychologists won't have answers. Economy पे जब आएंगे, how will Pakistan come out of this? How will we come out of this? We don't have answers. This is the most unpredictable situation this world has ever seen. That is why many analysts are saying, and I'm also 90% sure that after this pandemic, the biological aspect is over, we will see a whole new world. And I'm going towards an extreme statement also, but I believe this will happen. In the past few years, the world moved from individualization to globalization. And the interconnectedness of the global economies. We've seen that, we've experienced that. After this COVID-19, I'm foreseeing that we will move backwards from globalization to de-globalization. Whereby countries will try to make sure that we do not rely. आपको पता है सबसे बड़ा जो business को problem आया है, जो आगे भी आप लोगों को दिखेगा, that is the supply chain disruption. The whole supply chain has broken. I mean, we can't even imagine. Again, Pakistan is very less connected in terms of supply chain. क्यों? हमारे यहाँ कोई country या कोई company आके manufacturing नहीं कराती. We are not any big market for any company. तो हमें इतना अंदाजा नहीं. But if you look at global, you look at Bloomberg, you look at CNN, you look at BBC, you look at Yahoo Finance. आप अगर global news देखें, there's a major issue of supply chain disruption. Companies को समझ ही नहीं आ रहा. एक shoe बनाने वाली company, वो leather एक country से लेती थी, वो laces एक country से लेती थी, ठीक है, वो coloring dye एक दूसरी country से लेती थी. सब कुछ रुक गया, सब कुछ रुक गया. चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, ठीक है. एवरीथिंग स्टॉप, द होल वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप. सो नाउ पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स देयर ओन कंपनीज टू मेक गुड. आप देखें ना, वो कंट्रीज को कहा जा रहा है सर्जिकल मास्क और वेंटिलेटर्स बनाने के लिए जो गाड़ियां बनाती हैं.
जो मशीनरी बनाती है उनको कहा जा रहा है मास्क बनाओ, उनको कहा जा रहा है आप वेंटिलेटर्स बनाओ, क्या वो क्या कैसे करेंगे? आई डोंट नो क्या होगा, कैसे होगा, बट व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिग्नल फॉर इकोनॉमिस्ट टू सी द फ्यूचर इकोनॉमी। ये जो रिएक्शन है, दिस इज व्हाट आई कॉल डी-ग्लोबलाइजेशन, कि जो चीजें हम बाहर से करवा रहे थे वो अब खुद करो, नहीं है रिसोर्सेज फिर भी जबरदस्ती खुद करो। जनरल इलेक्ट्रिक वेंटिलेटर्स नहीं बना सकती, फिर भी कहा जा रहा है नो बनाओ बनाओ जबरदस्त। दिस इज व्हाट आई कॉल डी-ग्लोबलाइजेशन, एंड कंट्रीज विल नाउ मूव इन दिस एस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि इफ दिस थिंग कंटिन्यूज फॉर 2-3 months, कंपनीज करंटली ठीक है दे हैव दिस काइंड ऑफ सेविंग्स whereby they can pump more and more money in their resources, in their labor, in their employees, but that can maximum continue for 2-3 months. In the 4th month, in the 5th month, they can't. फिर क्या होगा? Massive layoffs coming specifically to जो मेरा forte है, that is the SMEs. SMEs in Pakistan are in a very crunch situation. We as individuals and as businesses also, we have never focused on savings. This lockdown, this business closure was so abrupt. ठीक है, 2 weeks time, 1 week time is actually abrupt. ठीक है, if you want to give time, you need to give a year to the businesses कि हम एक साल बाद लॉकडाउन करने वाले। एंड अभी तो जो पैकेज निकाला है गवर्नमेंट ने, आपने अगर वो पैकेज की डिटेल्स देखें, इट इज केटरिंग टू द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस पैकेज। ठीक है, एब्सोल्युटली वायरस से जो प्रॉब्लम, हम मास्क मंगाएंगे, हम वेंटिलेटर्स मंगाएंगे, हम लोगों को खाना देंगे। दिस 1200 billion rupees पैकेज और 1500 billion rupees पैकेज, दिस विल बी पीनट्स टू सेव द कंट्री, द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, क्योंकि SMEs इज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी। और अभी तमाम SMEs, ऑल SMEs वो बंद हो चुकी हैं। वर्क फ्रॉम होम का फायदा हो रहा है, बट वो तो एक उन लोगों को हो रहा है हु कैन सर्वाइव ऑन ऑनलाइन एस्पेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कैसे वर्क फ्रॉम होम करेगा, डिलीवरी यूनिट है वो कैसे वर्क फ्रॉम होम करेंगे? ठीक है, सो दैट्स अ मेजर हिट। सो द ओनली थिंग दैट दे आर लुकिंग अप टू इज कि भाई अल्लाह करे ये लॉकडाउन खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा ले ऑफ भी नहीं कर सकते अभी। आपको पता है कल इमरान खान ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, आई थिंक यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, ही अनाउंस्ड वन मोर स्कीम। He announced that those companies who won't lay off their employees, they will be given a kind of loan which will be much, much, much convenient and beneficial for them. What is he promoting? He is promoting that don't lay off not too people. late, yeah, no. But if the layoffs start, the kind of panic that will spread, जब job चले जाए, layoff जो है ना, we're not talking about 1000 layoffs or 2000, we're talking about layoffs in millions. That is the biggest panic. Not taking anything away from the business leaders, but SMEs के जो business owners हैं, उनका point ये है कि हम ठीक है, we don't want to lay them off, we want to retain them, but how can we retain them? हम 1 महीना retain कर लेंगे without business, हम 2 महीना retain कर लेंगे, वो chairman यही कह रहे थे, हम 2 महीना retain कर लेंगे, but for 3, 4, 5 months we just cannot. तो कहते हैं हम ऐसा नहीं, हम जानबूझ के, so this is a very unpredictable situation. Right now, the situation is very confusing and unpredictable also. We don't know. I mean, जो आज हम लोगों के साथ हो रहा है, 1 महीने पहले हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे जो आज हो रहा है। We don't know कि अगले 1 महीने बाद अभी क्या होगा. What will be the situation on 30th April? We don't know what will be the situation on 30th May. We don't know that. There is a possibility. क्या पता we come out of this, the world comes out of this. There is a possibility we might go much more deeper into this. क्योंकि देखिए बायोलॉजिकल क्राइसिस को अगर हमने केटर कर भी लिया, फिर अगेन आई एम रिपीटिंग, अल्लाह करे हम क्राइसिस को केटर कर लें, ये लॉकडाउन से देखें फायदा होगा और हो रहा है। द केसेस आर डिक्रीजिंग एंड इंशाल्लाह ताला सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थ्रू दिस लॉकडाउन केसेस कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन द नेक्स्ट क्राइसिस वी आर लुकिंग इनटू द सोसाइटल क्राइसिस, उसके बाद द मेजर क्राइसिस वी आर लुकिंग इनटू द इकोनॉमिक क्राइसिस। हाउ विल द इकोनॉमी रिस्पॉन्ड? दिस इज वन थिंग which जो मैं शुरू में आप लोगों को कह रहा था ना कि आप लोग बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है, because we need views from people, we need massive views from people कि how to survive the societal crisis, how to survive the economic crisis. Is there some hidden answer? I'm sure there will be some hidden answer in the Islamic teachings from the hadith, from the Quran, that to come up with some solution कि इसको हम इस क्राइसिस को कैसे कैटर करें। आप देखिए कितना बड़ा रिएक्शन आया है मस्जिद बंद करने पर। ठीक है, व्हाई? बिकॉज़ वी एज सोसाइटी आर नॉट अकस्टम्ड टू दिस, वी आर नॉट अकस्टम्ड टू दिस कि भाई हम तो मस्जिद में जाएंगे, सिचुएशन कह रही है मस्जिद में नहीं जाओ। अब ये कंफ्यूजन हो गया। So the million dollar question again, sir, what do you see? यानी कि हम सबके व्यूज ले रहे हैं कि आपको क्या लगता है, यानी
Abhi everybody's saying just shift to, everything online. But not everything can be shifted online, as simple as that. No. This answer is good for the United States. This answer is good for the UK, But for not for the European Pakistan, I'm sure. countries. But Pakistan के लिए this answer is, मैंने आप लोगों को क्या कहता हूँ, online buying हमारी hardly 2%, 3%. ठीक है, online world के अंदर we are not that advanced. हाँ, हो सकता है. Then again, the first thing that I said, that we are a resilient nation. There is a possibility, जो चीज मैं कह रहा हूँ 40 years, there is a possibility वाकई 4 years पे हो जाए, 4 months पे हो जाए. There is a possibility we as a resilient nation, we might adapt, miraculously we might adapt to the online world. Okay, there is a possibility. Let's not give up on this thing. Let's keep our hopes high. क्या पता जब हम इस कोविड से बाहर निकलें तो हम सडनली ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएं. We suddenly become a nation जो कि अपना ग्लव्स का ख्याल रख रही है, अपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रही है. क्योंकि अभी आई फील जो हम लॉकडाउन में ना 2 वीक्स 3 वीक्स, ये इसको हम कहते हैं ना कि मशीन में जो रगड़ा लग रहा है कपड़े को, ठीक है, ये एक रगड़ा लग रहा है, ठीक है, देयर इज अ मैसिव रगड़ा गोइंग ऑन. ठीक है, हो सकता है व्हेन वी एंटर आउटसाइड, व्हेन वी गो आउट ऑफ दिस लॉकडाउन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी माइट बी अ चेंज पर्सन, वी माइट बी अ चेंज कम्युनिटी, वी माइट बी अ चेंज कंट्री. देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. Resilience will be the key, and we have done it in the past, we can do it now also. We should start thinking about the economic aspect from now and then react that way. Yes, we need to Okay, start we are thinking, just focusing that's on why the I was saying, biological so far. Societal पे तो गया कोई नहीं अभी तक. Like जिस तरह सर आपने कहा कि supply chain का जो issue होगा, can this be an opportunity for पाकिस्तान की industries यहाँ पे लगे? आने वाले दिनों में आप लोगों को, अभी तो खैर हमें सिर्फ बुरी खबरें मिल रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हमें इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी न्यूज़ भी मिलेंगी. I really hope There so. are rounds going on that हम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग निकाल के पाकिस्तान में शिफ्ट. Exactly, that's exactly my point. There are rounds. अभी जैसे देखिए कि मुख्तलिफ फैशन डिजाइनर्स ने पीपीईज बनाने शुरू कर दिए हैं जो इनके नर्सेज और डॉक्टर्स के इक्विपमेंट्स हैं, तो maybe this is an opportunity for all these industries as well. This is a major with every crisis comes major opportunities. ठीक है, after GFC, the GFC crisis, the Great Depression of 1929, the dot-com bubble, ठीक है, so many new players came up, so many massive new players came up, and they ruled the world. ठीक है, this is also an opportunity, and players will come out. ये बात याद रखें. If some players will go, many players will come out of this pandemic. ठीक है, many new players. ठीक है, many I am foreseeing कि क्या पता ये e-doctor की facility के पूरी industry बन जाए हमारी country. ठीक है, I am foreseeing e-healthcare के ऊपर मैं बड़ा कुछ देख रहा हूँ. ठीक है, कि e-healthcare वाली industry बहुत ज़्यादा एकदम से mature होना शुरू होगी. ठीक है, there is unpredictability, and from this unpredictability, many new things will come out. So, having said all this, let's keep our hopes high. Let's keep our faith in Allah Ta'ala and in our own nation's resilience. Since you're also a teacher and you're giving live sessions now, the conversion from the physical aspect towards the digital aspect, as a teacher, how do you feel about it? What is the adaptation and the reaction from students coming in, and what are the challenges that you are facing? Very quickly. The biggest challenge जो मुझे face हो रहा है मेरी क्लास में, तो everything revolve around class participation and discussion. Everything. ठीक है, यानी कि in a class of 3 hours मैं hardly शायद 20-25 minutes बात करता था. अब the biggest challenge for me is कि मैं class participation कैसे करूँ. अब मुझे पूरा lecture I need to deliver it in that mode जो कि मैं पिछले 3-4 साल से जिसको avoid कर रहा था. That is in a typical lecturing mode. अब online में whenever I ask any question, suddenly I hear 20 voices, ठीक है, coming out of nowhere, and all 20 voices giving their answers. So there is a massive adaptability issue, not only from the faculty. देखिए problem क्या हुई है सबसे ज़्यादा in this online setup, that we as faculty, we were never trained for online teaching. This concept of schooling, ये क्यों ज़रूरी है? Because classroom environment बहुत ज़रूरी है. In a classroom environment, suddenly our brain changes. And अभी क्या हो रहा है, अभी हम घर में बैठे हैं, जिस बेड पे हम बैठ के प्ले स्टेशन खेलते हैं, जिस बेड पे हम बैठ के यूट्यूब देखते हैं, उसी बेड पे बैठ के हमने लर्निंग करनी है. Right. I don't know ये कैसे होगा. ठीक है. So as I said, it's a very unpredictable situation, but we need to adapt to it. Universities have closed till May 30th. We have to take sessions. But यहाँ भी मैं वही कहूँगा, and I say to my students also, that we are a resilient nation. Again, resilience is the key in all this pandemic.
let's keep an eye on the situation, because every day will be a new and a learning situation for us.